Good morning everyone, I am Aditya and welcome back to the channel. Currently it's around 11:30. We left our hotel in Somnath at 11 am. We stopped here to get some petrol. Gir is around 1 hour journey from our hotel. So we are halfway there, almost halfway there. We have booked our safari at 5 pm today. This is a 1 hour safari. Tomorrow we have another safari for 3 hours, which is in the morning. You have to book a ticket online and then you need to get a printout. And when you go to the safari today, you need to submit your ID card proof and this printout copy. You can either book a jeep or bus. If you book a bus, per person it costs you around 200. But if you book a jeep, it will cost you around 2,800 per jeep. So you can either go 1 person, 2 person or up to 6 persons in a jeep. So we have paid 800 and booked a slot, and that 800 is for permit. So when you go to the safari, you need to show the printout and then you need to pay the rest of the money. There are different timings. It is at 4 o'clock and it is at 5 o'clock as well. So we have booked this slot at 5 o'clock. So yeah, we'll be going to Gir now. We'll go there and have some lunch. We reached our resort. We are staying in a resort called Glorius Gir Resort. Right now the time is 12:30. So it took some time to arrange stuff here because they didn't get our booking here. But anyway, it's all sorted out now and we got our rooms. So the resort is located in a remote place, but it's very well maintained. At least the first site looks very good. So I'll show you around the resort now. But before that, I will just tell you about our plans. We have our safari booked at 5 pm today, and it takes around 20 minutes to reach the place where they start the safari. So we'll be leaving our resort around 4 o'clock or 4:15 so that we reach there by 4:30 or 4:45. We have booked our safari online, so everyone has to do this. You have to take a printout of the copy which you have done online. Then you need to produce this printout and your ID card. So it's whenever you are booking a safari, you have to select which ID card you are bringing, maybe Aadhaar card or DL or any other ID proof. So you need to show that ID proof here and you need to bring the printout copy. Safari is 1 hour. Tomorrow there is another safari. The procedure is same, where you have to book the tickets online. The rates are different, so I will mention the rates and different timings available in the video description. So the morning safari is 3 hours and the evening safari is 1 hour. On our way to the resort from Somnath, we saw a lot of mango plantations. So when you are driving in the road, it is very beautiful drive because on both the sides of road you can see a lot of mango trees. And even here in the resort also and around the resort also, there are a lot of mango trees. So if you come here during summer, which is March or April, when during the time of mango harvesting, I think you will be able to eat some delicious mangoes. Because they didn't get our booking at the right time, so they told it will take some time to prepare lunch. So we will have lunch and we will relax because the resort is good and breeze is good and there are a lot of trees around. So I'll show you around the resort. So after having lunch, we'll relax a bit and then we'll leave for the safari. So I'll see you guys in safari. It's around 4:20 and we reached Singh Sadan. This is where you have to come if you are going to safari, and from here the gypsy will be available for you. So right now we came here and we'll produce our ID cards and then we'll see. So we showed our ID proof and the printout which we took, and we paid 2,000 rupees. We got the permit and we are going to the jeep. For camera you have to pay extra 200,
and make sure that you bring the change, and you bring the cash also, because there is sometimes network problem and they don't accept Google Pay or credit card and stuff. So make sure you bring the cash and you bring the exact change. देवलिया का जो फॉरेस्ट एरिया पूरे गिर का 1412 स्क्वायर किलोमीटर का है। उसमें लायन है 674। और अभी हम जो घूमने जा रहे हैं वो एरिया है 412 हेक्टेयर का गिर इंटरप्रिटेशन जोन देवलिया। गिर का छोटा सा पार्ट है वो कवर करती है 16 स्क्वायर किलोमीटर। लायन के बिना क्या क्या? लायन के अलावा लेपर्ड है, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, नीलगाय, एकल, हाइना, दस्ती स्पॉटेड कैट, सिवेट कैट, जंगल कैट, बेंगोलिन, पोर्चुगाइन, वाइल्ड बोर, हनुमान लंगूर, टोटल 39 स्पीसीज के मेंबर है। जंगल के बीच गांव भी होता है। हाँ, जो ओपन जंगल है उसमें ट्राइबल विलेजेस है जिसको गुजराती में मालधारी बोलते हैं। उसके पास गाय भैंसें रहती है तो उसका बिजनेस यही रहता है। वो बफेलो चराते हैं और मिल्क का बिजनेस करते हैं। और ये गिर में एक ट्राइबल विलेज है जो तो पूरे वेजिटेरियन है। बफेलो को मार दिया बाई चांस अगर जंगल में तो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको 50% रिफंड देगा। और रात को यहाँ पर सफारी अलाउ नहीं, हेलो गिर नहीं। में नहीं। 6 बजे सब बाहर निकल जाते हैं। आज से हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है और मैं आज की सफ़र के लिए आपका गाइड हूँ। खास करके आपके पास कोई प्लास्टिक पॉलीथीन है तो गाड़ी के बाहर मत फेंकना और आपका कोई पर्स मोबाइल नीचे ना गिर जाए उसका खास करके ध्यान रखें। जिस एरिया में हम घूमने जा रहे हैं वो एक गिर इंटरप्रिटेशन जोन है देवलिया, जिसमें छोटे से एरिया में हमें पूरे गिर का परिचय हो जाता है। तो इसमें हम टोटल 55 मिनट घूमेंगे, वो भी अगर हमें रेगुलर सब एनिमल्स दिखते रहे तो। बाकी हमारा रूट जो है वो 5 से 7 किलोमीटर का ही रहता है और उसे कवर करने में हमें 15 से 20 मिनट लगता है। हाँ, अगर कोई एनिमल्स मिल जाता है तो उसमें हमारा टाइम ज़्यादा है। और ये फॉरेस्ट आप देख रहे हो, ये गिर का फॉरेस्ट जो है ड्राई एंड डेसिडियस है। 6 महीना ग्रीन और 6 महीना ड्राई रहता है। फिर विंटर के 2 महीने के बाद ये पूरा ड्राई हो जाएगा। यहाँ फॉरेस्ट फायर सब नहीं होता है? होता है, समर में होता है। अच्छा। तो अभी तो बहुत कम होता है क्योंकि डिपार्टमेंट वाले जो है ये रोड के आजू बाजू में 20-20 मीटर जला देते, अपने आप ही फायर कर देते, कंट्रोल फायर, ताकि अगर इस साइड आग लगी हाँ तो पूरा जंगल ना जले, वो यहीं पर ही बुझ जाएगी। इधर सांबर और ये मेल है, इसमें जो मेल रहेगा उसके ऊपर वंश रहेंगे। ब्लू बुल, नीलगाय बोलते हैं इसे। ये मेल है, ये मेल इसमें ब्लू जैसा रहेगा, फीमेल ब्राउन रहेगी। इसमें भी जो विदाउट वंश वाले है वो सब फीमेल है। हाँ। वंश वाले जो है वो मेल है। और ये तो हिरन है। ये तो हाँ, ठीक है। वो
भी देख दिया नीलगाय को। लाइव शिकार देख लिया ना, बहुत कम मिलता है ये, और मैनीटर नहीं, बिना वजह किसी को अटैक नहीं करेगा। और जब तक वो उससे दूर है गाड़ियाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लायन ट्रैकर है, किसान है या उसकी आवाज़ है या कोई अभी डियर ने आवाज़ की, ऐसी आवाज़ के ऊपर से वो लायन को ढूंढते हैं। खाना आप डालते हैं? नहीं, डिपार्टमेंट वाले डालते हैं, खरीद के बाहर से आता है। पानी सब कैसे डालते हैं वहाँ पे? पानी यहाँ पे वो नल है, हाँ, पाइपलाइन है, अच्छा, वहाँ से चालू करते हैं। और खाना वैसे? खाना ये जो छोटे केज है ना, हाँ, तो उसमें डाल देते हैं, वहाँ से गाड़ी जाता है अंदर, डाल देते हैं, फिर उसका जो हैंडल रहता है उससे वो खोल देते हैं, फिर अंदर जाके ले आते हैं। इसकी सफाई करनी होती है तो वो खोल देंगे, ये सब अंदर चले जाएंगे। कितना लायन होता है वो कैसे ट्रैक करेंगे आप? उसका हर 5 साल में काउंटिंग होता है। हाँ, अभी लास्ट काउंटिंग 2020 में हुआ था। टीम को 10-10 किलोमीटर का एरिया दे दिया जाता है, उसमें फॉरेस्ट ऑफिसर रहता है, उसके साथ वॉलंटियर्स आप जैसे भी आ सकते हैं, हाँ, और गाइड ड्राइवर रहते हैं। तो उसको एक स्केच दिया जाता है, मेल का दिया जाता है, फीमेल का और बच्चों का। और जहाँ पर उसको मान लो कि यहाँ पर 3 लाइन मिले हैं, तो उसको कहाँ कहाँ पर स्क्रैचेस है लगा हुआ है या कोई निशान है, तो उसको वो स्केच में टिप करना है, फिर उसकी फोटोग्राफी करनी है, फिर उस पर पग मार के उसकी फ़ोटो लेंगे और उसका GPS डेटा लेंगे, फिर उसको कंप्यूटर में डाला जाता है। तो अगर कोई सेम आया तो वो कंप्यूटर मना कर देता है। अगर लायन का डेथ हो गया तो वो वैसे ही छोड़ेंगे या कहीं पर? नहीं, उसे अग्नि संस्कार दे देते हैं। पहले उसके सब पार्ट वो चेक करेंगे कि उसके नाखून सब है ना, हाँ, किसी ने निकाल नहीं लिए है बेचने के लिए। अगर सब कुछ कंफर्म होगा फिर यहाँ पे रेस्क्यू सेंटर है, वहाँ पे उसको अग्नि संस्कार देंगे। 6:15 right now, and we are exiting Southern from where the safari started. When the lion came close to the jeep, we felt scared, to be honest, but our guide had told us that lions won't attack humans. So this is it for today. Right now we are going to a souvenir shop to buy some fridge magnets. After that we'll go to our resort and we'll relax there. Tomorrow we have the Gir Safari, which is 3 hours long, which starts at 6:45, and we have to come to the same place. Today for this safari there were only 10 jeeps as maximum, but tomorrow we saw in the internet that there will be 50 jeeps, 50. So it's going to be a little bit crowded, but I hope we can see some more lions. So we'll see you there. If you like the video, please subscribe to the channel, share the video and give a thumbs up and add a comment. If you don't like the video, you can still add a comment about what you don't like. So thank you for watching, and I will see you tomorrow in the same place.